So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Kanchan with us. So Kanchan, would you like to introduce yourself once? Yeah, guys. Hello, guys. My name is Kanchan Singh, and I'm a BCA graduate. I currently joined Deloitte as an analyst. Right. So like she mentioned, she recently joined Deloitte as an analyst and she cracked Deloitte off campus as well. We'll be getting to know her journey, her interview experience and her preparation as well. So Kanchan, would you like to start us off with your interview experience? Like how did you apply? What all happened? How did it go? So चेन में डेलाइट यूएसआई के फॉर्म आते हैं एनएलए के लिए नेशनल लेवल असेसमेंट मैंने उसमें अप्लाई किया ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सो आफ्टर जब मैंने अप्लाई किया देन द सेकंड जो प्रोसेस रहती है इज रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग सो देन रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट लिए एंड द सेकंड प्रोसेस इज ऑनलाइन एग्जाम सो इन ऑनलाइन एग्जाम देयर इज थ्री पार्ट फर्स्ट इज योर एप्टीट्यूड एंड सेकंड इज योर इंग्लिश एंड थर्ड इज योर basic DSA question. Like medium level, you can say like any, I think it's not too hard and not too easy. And the third part is interview. So then they take your interview. If you qualify, if you pass your online exam, then you will do your interview. So the process of interviews can be 30 to 15 minutes. They will ask question about your resume and about your college, about your project, and also the technology mentioned in your resume. For me, in my resume, the SQL and Java was mentioned. So they asked me some basic questions about my project, my college journey, and some HR related question. And the second, they asked me some SQL queries because it's a consulting firm. So they prefer SQL much and they prefer Java too. So they asked me some OOPS question from Java, and also some DSA question, some medium to easy question. And in SQL, they asked me queries to easy to advanced, all this. Right. ठीक है, तो it was divided like you said, aptitude था, and then it had DSA, SQL, and you were asked Java, oops, and interview का main part was your resume, है ना? Like they asked Yeah. questions, हाँ, about your resume, all right. तो जैसे वन बाई वन अगर हम जाए तो एप्टीट्यूड का आपको डिफिकल्टी क्या लगा? आप थोड़ा बता सकते हो एप्टीट्यूड के बारे में, लाइक व्हाट वाज ऑल इन देयर? या सो मैं ऑनेस्टली बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने जैन में अप्लाई किया था आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट एज अ बीसीए बैकग्राउंड ना नहीं लगता कि लाइक बिग फोर में हो जाएगा बट स्टिल आई वाज एक्चुअली दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स एग्जाम CUET PG सो दैट्स व्हाई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर दैट सो वो वर्क कर गया आई विल से कि बहुत टफ नहीं आता बट इफ यू अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया एंड देन इट्स गोना बी टफ बेटर अगर 2-3 वीक्स लेके अगर उसका प्रैक्टिस कर लिया जाए सो यू कैन डू इट All right. So, ठीक है, about aptitude we discussed. Now, let's talk a little bit about the DSA part of it. Like, do you remember what type of questions were there? What was the level of DSA that you faced? Okay, so in DSA section there was two questions. One was on array and second was on string. So array का question आया था. I think आप लोगों ने किया होगा and something like it was you will have a sentence in array, a sentence or a word name. Then you have to count the frequency of that. Like my name is Kanchan. So you have to count the frequency of a word in that array. So first question ये था. Second question का था कि there was string question. So आपको वहाँ पे string होगी. Then आपको match करना होगा according to a criteria. So I would say difficulty level it's not that difficult, tough नहीं रहता. It's a medium level questions रहते हैं. So if you do some medium level of DSA, some basic, some questions of array and string, then I think कर सकते तो I guess most problems array strings या ad hoc maths related ही होंगे, है ना? I हैं. don't Yeah, think yeah. ज़्यादा advanced DSA तक जाता होगा. No, not advanced DSA, but medium DSA. तो easy medium अगर कोई lead code problem Yeah. medium कर रहा है, that's enough for Deloitte's interview, है ना? Yes. राइट ऑल राइट. ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि एप्टीट्यूड भी था, उसके अलावा यू हैड एसक्यूएल, जावा ओप्स था, डीएसए भी था, एंड ऑल दीज थिंग्स वर देयर. सो आई वांट टू नो बिट अबाउट योर प्रिपरेशन, कि हाउ डिड यू प्रिपेयर टू बी एबल टू कम एट अ लेवल कि आप क्लियर कर पाए ऑल ऑफ दीज थिंग्स? Okay, first of all, I want to tell about my journey. So मैंने 12th किया था PCM से and my second subject was physical education. So ओके. 12th तक मुझे कंप्यूटर CS के बारे में कुछ नहीं पता था. मुझे ये भी नहीं पता what is a language. I know English, Hindi is a language. I was not. हाँ I didn't know about the Java, SQL, and Python, all of हाँ. this. So in college, that's why I choose BCA. Because I didn't have any idea about CS. So in BCA first semester में हमको C पढ़ाया गया था. So that was my first time learning something which is very different for me. मुझे हाँ कोई यस. idea नहीं था कि कैसे language work करते हैं all of this. So
सो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा था लैंग्वेजेस हाँ। में, कोडिंग में। सो मैंने फर्स्ट सी ही करना स्टार्ट किया था। इन फर्स्ट सेमेस्टर इट वाज ओके, एंड सेकंड सेमेस्टर में भी हमने वही सी को ही पढ़ा, बस कोई अदर लैंग्वेज नहीं थी। सो आई वुड से फर्स्ट ईयर में मेरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं था कोडिंग पे, इतना ज़्यादा फोकस नहीं था प्रोजेक्ट पे से। बट इन सेकंड ईयर आपको फील होने लगता है ना कि आपको प्रोजेक्ट भी देने हैं, इंटर्नशिप भी करनी है, एंड थोड़ा मार्केट का हाँ। कैसा सिस्टम चल रहा है और जॉब के लिए टेंशन होने लगता है। इन सेकंड ईयर इन माय थर्ड सेमेस्टर जावा इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड हम्म। मैंने स्टार्ट किया था बेसिक क्वेश्चन जावा से करना। लाइक स्टार्ट तो मैंने सिंपल क्वेश्चन से किया था, फ्रॉम लूपिंग, इफ क्वेश्चंस एंड पैटर्न क्वेश्चंस, तो उनसे स्टार्ट किया था। जावा मैंने पढ़ी, एंड थर्ड ईयर तक जब तक मेरा डायरेक्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जावा पे बेसिक टीएसए के क्वेश्चन करती रहती थी कंटिन्यूस हम्म। फॉर 1.5 years। फिर फोर्थ सेमेस्टर आया, उसमें फिर कॉलेज से हुआ, इंटर्नशिप का प्रेशर आया, प्रोजेक्ट का प्रेशर आया। सो मैंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, मैंने वेब डेवलपमेंट की, फ्रंटिंग सीखा। सो वही प्रोजेक्ट मेरे डेलॉइट में जब मैंने रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, मैंने उसमें भी डाले थे। सो आई थिंक दैट्स ऑल। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम माय थर्ड सेमेस्टर डूइंग सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ डीएसए टिल माय सिलेक्शन। हम्म। राइट, राइट, राइट। एंड जैसा आपने बताया कि यू डिड सम प्रोजेक्ट्स दैट वर देयर इन योर रिज्यूमे दैट आल्सो गॉट यू शॉर्टलिस्टेड इनटू डेलॉइट। तो थोड़ा आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स थे वो, या क्या टेक स्टैक था उनका? या सो दो प्रोजेक्ट थे मेरे रेज्यूमे में। फर्स्ट वाज फॉर पाइथन एंड एसक्यूएलाइट। सो ये ग्रुप प्रोजेक्ट जो हमें कॉलेज में ही दिया गया था फॉर इंटर्नशिप, जहाँ पे हमें एक सिस्टम प्रिपेयर करना था। मैं और मेरा ग्रुप था, मेरे दो फ्रेंड थे, तो हम तीन लोगों ने मिलकर वो प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। मेरा जो मोस्टली काम था वो एसक्यूएलाइट पे था। आई थिंक दैट हम्म। इज अ प्लस पॉइंट फॉर मी, बिकॉज इंटरव्यू में से हाँ। एसक्यूएल ही जो चला, तो मैंने एसक्यूएल पे ही वर्क किया था। बट जो सेकंड प्रोजेक्ट था दैट वाज कंप्लीटली माइन, बिकॉज इन कॉलेज एक सिंगल प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है जो आपका ही, तो उस पे मैंने मोस्टली फ्रंट एंड पे वर्क किया था। सो उसमें मैंने HTML, CSS, JS एंड रिएक्ट का यूज करके एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाई थी, जिसपे हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स थे। आई वुड से इट्स लाइक ओके। गेम स्टोर नाइस। टाइप वेबसाइट। हाँ। Nice, nice, nice. All right. So we've talked about the interview experience. We've talked about your journey. So let's say on a final note to all of the people who are watching this video, उनको भी Deloitte crack करना है, Big Four crack करना है, एक ऐसी कंपनी क्रैक करनी है, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि they'll also be able to? सो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप डेलॉइट को एम कर रहे हैं या फिर कोई भी बिग फोर एम कर रहे हैं, सो आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। तो फर्स्ट इज एप्टीट्यूड। आई विल से कि जनरली जो डेलॉइट का रहता है वो जेन में उनकी आते हैं फॉर्म वगैरह। सो यू विल स्टार्ट योर लाइक थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दो एप्टीट्यूड, 1 or 2 months, बिकॉज नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड नोट साइड बाय साइड कंप्लीट करके रखो कि जब पास आ जाए लाइक 1 and 2 weeks, देन यू कैन प्रैक्टिस इट। एंड फॉर डीएसए आई विल नॉट से कि 1 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो। टेक्स टाइम। सो स्टार्ट मच मोर अर्ली, लाइक 1 साल पहले आप स्टार्ट कर दें, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कर दें, सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दें, एंड डू सम क्वेश्चन ऑन लीड कोड, like easy to medium is enough, and you can read about the theory of OOPS. Like I said in my interview, Java was asked and OOPS was asked, so you can read about your prepare for theory in Geeks of Geeks, prepare your notes about it. So I think, and do some last year question of the light USI, it is also very important. And be confident, prepare. Okay, it is important. I did lots of preparation in front of camera when my interview was scheduled. I like in हाँ। my project के बारे में points बहुत important होते हैं. If you write like 4 to 5 points about your project, it is also very those. हम्म। राइट, वही मेन चीज़ है ना कि यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यूर थिंकिंग। वो नहीं हो Yeah, पाएगा तो फिर कितने भी अच्छे हो, नहीं होने वाले no, है no, ना? no. It's not matter of if you know everything but you can't talk about it. No, it will not. हम्म। It is not good in your interview. So in interview, हाँ। try to write some 3 4 lines about your project. Also, they will ask about your project कि क्या project था, कैसे work किया. If it is a group project, then वो पूछेंगे आपने किस module पे work किया, आपकी क्या position थी, and all this. हम्म। They will ask in interview. Hmm. Right, right, right. All right. So that's some wonderful advice right there. And if any of you still have any doubt, then I'll give Kanchan's LinkedIn in the description. You guys can follow her from there and connect with her from there as well. So I guess that covers pretty much everything about her journey, preparation, and everything else. So thanks a lot, Kanchan, for coming on the channel. I really hope this helps a lot of students who are appearing for Deloitte. So yeah, thank you for coming. Yeah, thank you, Ashish. Thank you for inviting me.